Very good morning, dear students. Today we are going to read a poem, God's Attributes, which has been written by Jalaluddin Rumi and has been translated by Dr. Nicholson. So first we talk about title, God's Attributes. Attributes stands for qualities, sifat. So God's attributes would be Khuda Ta'ala ke sifat. Now, if we talk about Jalaluddin Rumi, he was a 13th century Persian poet. Remember बेटे आपने इसको Persian नहीं कहना. He was a Persian poet and was considered a theologian and a Sufi mystic. Theologian is a person who writes about or who talks about theology, talks about religion, and he was a mystic, यानी वो एक सूफी थे. His poems have widely been translated into different languages. As you can see that this present poem is being translated into English language. So, the basic concern of Jalaluddin Rumi writing is to develop a relationship of human being with their Lord. That means with Allah the Almighty. अब इस poem में what he has talked about the qualities of Allah the Almighty. अब ये qualities कौन सी है? Let's see. God calls himself seeing to the end, that his eyes may scare you from sinning. God calls himself, खुदा अपने आप को कहता है seeing to the end, आखिर तक देखने वाला, यानी बसीर. That his eyes may scare you from sinning. और वो खुद को बसीर क्यों कहता है? ताकि उसकी आंखें तुम्हें scare you, डरा सके from sinning, गुनाह करने से. How would it happen? Because if you realize that God is watching you even behind the doors, you might stop yourself from committing evils. क्योंकि आप जानते हैं कि आपको खुदा देख रहा है, even if nobody else is there. So if we keep the seeing quality of God in our mind, we can refrain ourselves from sinning. God calls himself hearing to the end, that you may close your lips against foul discourse. खुदा अपने आप को कहता है कि ही इज़ हियरिंग टू द एंड, वो आखिर तक सुनने वाला है, यानी वो समी है. सो दैट यू मे क्लोज योर लिप्स अगेंस्ट फाउल डिस्कोर्स, ताकि तुम अपने होंठ बंद कर लो जब भी कोई फाउल डिस्कोर्स, कोई भी गलत बात, गलत गुफ्तगू करने लगो या सुनो तो. So what is the purpose of this attribute? That is definitely to stop man from doing any evil and foul conversation. Because when you have a faith that Allah is hearing all your words, then you will definitely try to avoid evil discourse. आप दूसरों के खिलाफ evil plantation नहीं करेंगे, आप कोई गलत बात नहीं करेंगे. You would stop yourself from gossiping. Then God calls himself knowing to the end. खुदा कहता है कि वो हर चीज़ को जानने वाला है, यानी अलीम है. That you may be afraid of him to plot an evil, ताकि जब भी आप कोई plot an evil, कोई भी बुराई करना चाहें, बुराई का मंसूबा बनाना चाहें, तो आप खुद को रोक लें, क्योंकि आप जानते हैं, because you have a faith that God knows your intentions to the end. He knows everything and nothing is hidden from God's view. And Allah knows what is in our hearts, even our deepest secrets, even our darkest desires. Everything is quite well in God Almighty's notice. So if we know this quality, if we have a faith in God's attribute that He is knowing to the end, we might, avoid from plotting an evil or designing our evil intentions against anyone. Then, these are not mere accidental names of God. ये खुदा के सिर्फ हादसाती या इत्तफाकिया नाम नहीं हैं. As a Negro may be called camphor, जैसे हम किसी नीग्रो यानी किसी हबशी को हादसाती तौर पे कैम्फर बुला देते हैं, उसको गोरा बुला देते हैं, ठीक है. या कैम्फर होता है, एक सब्सटेंस होता है बेटे जो सफ़ेद कलर का होता है. तो समटाइम्स जो नीग्रोज़ हैं उनको हम आयरॉनिकली यानी उनको टॉन्ट करने के लिए तंज के तौर पे लोग उनको कह देते हैं, कैम्फर कह देते हैं, या हादसाती तौर पे कह देते हैं. तो रिलेट कैसे किया गया है कि जैसे कुछ चीज़ों के नाम, लोगों के नाम महज हादसाती तौर पे पड़ जाते हैं, तो खुदा के नाम ऐसे इत्तफाकिया नाम नहीं हैं, बल्कि ये एक्चुअली रिलेट करते हैं with the attributes, with the quality that Allah Almighty already has. So there is no hint of exaggeration or irony
They are real, true, and related to God. Last stanza. So are these names derived from God's attributes. इसलिए खुदा के ये जो नाम हैं derived वो निकले हैं खुदा के एट्रीब्यूट से ही, खुदा के सिफात से ही, क्योंकि जो खुदा कहता है कि मेरे ये नाम है वो वैसा करता भी है. If he says he is all knowing, all hearing and what was the last? And all seeing, that means he already knows and relates himself to the titles. And then not mere vain titles of the first cause. और ये खुदा के सिर्फ vain titles नहीं हैं, महज उनके अलकाबात नहीं हैं. of the first cause हम बोलते हैं originator को, क्रिएटर को, यानी अल्लाह को. तो ये अल्लाह के जो नाम हैं ये सिर्फ वेन टाइटल्स नहीं हैं, ये महज अलकाबात नहीं हैं, ये असल में अल्लाह ताला की खुसूसियात हैं जिन पर वो अमल भी करता है, जिनको वो दिखाता भी है. ठीक है बेटे. So I hope this poem makes sense to you, and let us now discuss the salient points in the poem. Good day.